Across India, hospitals meant to save lives are increasingly finding themselves under the scanner over the very deaths they were meant to prevent. From Rajasthan, where 18 maternal deaths have been reported since May across multiple government hospitals, to Kerala, where an 18-month-old toddler died after being administered anaesthesia for a minor lip injury. Families are asking the same haunting question. Did negligence cost these lives? Remember, the spotlight first came in Rajasthan. And since May, we've been telling you these stories. And if we put those numbers together, this is what it looks like. 18 women have died around childbirth in hospitals across Rajasthan, in Bhilwara, in Banswara, in Kota, in Jodhpur, in Bikaner. The latest flashpoint is in Banswara, where 5 mothers died in just 6 days. Now, a 14-hour investigation by a 2-member expert panel has submitted its preliminary report. And the findings are not just about fake drugs, has been the trend across Rajasthan and Madhya Pradesh, but the probe reportedly holds doctors responsible, puts nursing staff under scrutiny, and also indicts the mother and child health program in charge. Investigators have flagged violations of maternal care protocols, deficient monitoring, breakdowns in hospital system, and also multiple procedural lapses. The government has promised action, but for families who have already lost their wives, their mothers, their daughters, accountability comes too late. And a chilling rerun of sorts even in Kerala. Because if you thought the story was just about the Hindi heartland, think again. The crumbling infrastructure, the crumbling healthcare infrastructure in the country that runs all the way from north to the south of the country. In Kerala, what happened? An 18-month-old child taken to a hospital for what began as a minor lip injury, he never came back home. The toddler died after being administered anesthesia. The family alleges medical negligence. Police have now booked the anesthetist. Dr. Anjali, we are told her name is. The pediatrician and the plastic surgeon involved in the treatment will also be questioned. An expert medical board has now been tasked with uncovering exactly what went wrong. The investigation will examine the postmortem report, anesthesia records, dosage administered, treatment files, medical history, all of those things, including hospital documentation. But every decision taken inside the operation theatre is now under forensic scrutiny, including the medicines that were used. While the family says negligence led to the tragedy and questions the very decision to administer anesthesia, the hospital maintains that the child suffered a cardiac arrest after anesthesia and was immediately resuscitated and put on the ventilator support but could not be saved. Investigators will also seek answers to difficult questions. Was anesthesia medically necessary for the procedure? Was dosage appropriate? Was mandatory pre-anesthesia checks really carried out? Was standard treatment protocols followed? And perhaps the most painful question of all, could this clinic's entire way of handling the case be the reason that the child is now no more? So what exactly are we telling you here? That there are 2 states, 2 heartbreaking tragedies, Rajasthan, Kerala, but one disturbing question confronting India's healthcare system. And are these really isolated medical complications or symptoms of deeper systemic failures inside our hospitals? All right, meanwhile, we are getting updates that Rajasthan government is now under fire after we've been covering this story on maternal deaths for a month almost now. Rajasthan government has launched an intensive screening campaign for all pregnant women. They have now kicked in a 5-day campaign to run statewide starting July 15th. And during this campaign, records of critical paternal prenatal health checkups will be maintained, and the health of pregnant women will be regularly monitored as well.
My colleague Sharat now joins us for more details on this, and we'll cut across to Shibi Mol as well from Kerala for more on this story. But Sharat, to you first. करीब 1 महीना हो गया कि हम लगातार कोटा से लेकर जोधपुर से लेकर बीकानेर और अब बिंसवारा जैसी जगहों पर ये मैटरनल डेथ्स रिपोर्ट कर रहे हैं। सरकार कह रही है हमने प्री नेटल चेकअप्स कराने शुरू कर दिए हैं, पर सारी जितनी भी डेथ्स हुई हैं उसमें कहीं भी प्री कॉम्प्लिकेशंस तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अगर दिखाई दे रही हैं तो वो दिखाई दे रही है इनसफिशिएंसी अस्पताल की, वो दिखाई दे रहे हैं अडल्टरेटेड ड्रग्स, प्रोटोकॉल्स मिसिंग और आपके हेल्थ मिनिस्टर का बहुत ही इनसेंसिटिव जवाब। दिखाई तो ये सारी चीज़ें दे रही हैं और कैंपेन लॉन्च कर दिया गया है प्री नेटल का। क्या कनेक्शन है दोनों में? देखिए, यही सोनल कह सकते हैं कि 18 मौतों के बाद होश में आने की कोशिश कर रही है राजस्थान सरकार। मगर बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत ही इनसेंसिटिव ये रवैया रहा है सरकार का इन मौतों के प्रति। 18 मौतों के 100 कारण आपको गिना दिए अब तक 1 महीने में सरकार ने, मगर असल वजह क्या थी अब तक सरकार को पता नहीं है। वो मिस्टीरियस मान रही है। कभी टेम्परेचर को लेकर, कभी महिलाएं ज़्यादा बीमार हैं, कभी एनीमिया के शिकार हैं, कभी डिहाइड्रेशन हो गया, कभी इमरजेंसी आ गया, कभी रेफरल केस आ गया। हमने कल भी पूछा था, रेफरल केस तो सबसे ज़्यादा रोजाना 300 आते हैं जयपुर में, तो वहाँ तो एक भी डेथ नहीं हो रही है इस तरह से। अब इन सवालों का जवाब आप कहो कि वहाँ रेफरल सरकारी अस्पताल में आते हैं इसलिए डेथ हो रही है, तो फिर जयपुर में क्यों नहीं हो रही है? यहाँ तो सबसे ज़्यादा रेफरल आते हैं। तो कई तरह के बहाने खोजे जा रहे हैं, मगर असल वजह जो है जांच टीम गई थी और उन्होंने रिपोर्ट में जो लिखा है कि कहीं न कहीं अस्पताल में लापरवाही है। किसी ने नर्सिंग कर्मी से लेकर डॉक्टर तक को उन्होंने दोषी माना है। और आज गए थे राजस्थान के हेल्थ मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर भीलवाड़ा। हंगामा मचने के बाद आज उन्होंने मीडिया से बात करने से मना कर दिया। बोला कि मैं बांसवाड़ा जा रहा हूं, अभी मैं कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि कल जिस तरह से उन्हें ठहाके लगाए थे और उनके ठहाके लगाने पर सारे डॉक्टर और मेडिकल विभाग के अधिकारियों ने ठहाके लगाए थे, उस पर राजस्थान ही नहीं देश के लोगों ने लानत भेजी है। शर्मिंदा करने वाला वो दृश्य था, जिसके बाद आज सरकार ने कोई बात नहीं करने का फैसला किया है और ये कहा है कि अब 15 जुलाई यानी कल से लेकर एक अभियान चलेगा, जहां पर गांव-गांव में आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स सब भेजे जाएंगे और जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके सर्वे होगा और 12 सप्ताह के अंदर हर एक डेटा पोर्टल पर डालना जरूरी होगा, जिनके पूरे हेल्थ रिकॉर्ड को मॉनिटर किया जाएगा। ये अच्छा कदम है। देखिए, अगर हो सकता है तो इससे अच्छा कोई कदम हो नहीं सकता। ये आइडियल सिचुएशन भी होना चाहिए जब इतनी बड़ी संख्या में एएनएम से लेकर और हेल्थ सेंटर बने हुए हैं फिर भी मॉनिटर नहीं होते हैं। तो सरकार ने ये कोशिश की है, लेकिन इतनी सारी मौतों के बाद की है। जहाँ जहाँ पर मौतें हो रही है, अब कोटा में बंद हो गई मौतें होना, जैसे बीकानेर में बंद हो गई मौतें होना, तो जहाँ जहाँ मौतें हो रही वहाँ सिस्टम आप ठीक कर रहे हो, इसका मतलब कि आपके सिस्टम में कोई ना कोई गड़बड़ी है। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो, इसको लेकर अभी तक कोई इन्होंने मापदंड तय नहीं किया है। कभी कहते हैं कि देखिए एम्बुलेंस टाइम पे नहीं आती महिलाओं को, इसलिए देरी से आती हैं, तो फिर एम्बुलेंस भी विभाग का ही है। कल आप जो बयान देखिएगा, जो डॉक्टर कह रहे थे कि अरे ऑक्सीटोसिन में पानी था, तो क्या पानी लगने से कोई नुकसान तो नहीं हो सकता? पानी लगने से नुकसान नहीं हो सकता, मगर लेबर में वो सहायक भी तो नहीं हो सकती दवाइयाँ। दो दवाइयाँ फेल हो गई, बाकी दवाइयों का क्या है? ओटी के इन्फेक्शन को लेकर अभी तक ये कह रहे हैं कि हमने कोलकाता भेजी है, कोलकाता के सेंट्रल लैब से रिपोर्ट नहीं आई है। तो क्यों इतना वक्त लग रहा है? तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से ये ब्लंडर बढ़ता जा रहा है। अब जाके सरकार जागी है और उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से फायर फाइटिंग स्तर पर आज मीटिंग हुई है हेल्थ विभाग की और निर्णय लिया गया है, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो। और सुनल, जो आप 1 महीने से मुहिम चला रहे हैं, उसका मकसद यही है कि राजस्थान में हेल्थ का जो सिस्टम है वो ठीक हो, जो दवाइयों का सिस्टम है वो ठीक हो। और शरद, इन्होंने जो तरीके निकाले हैं उस पर बहुत प्रश्न बनते हैं, बहुत प्रश्न बनते हैं उन तरीकों पर, क्योंकि वो कह रहे हैं हम आशा वर्कर्स के पास जाएंगे। जिसने भी हेल्थ कवर करा है एज अ बीट, वो रिपोर्टर आपको बताएगा कि अगर एक सिस्टम है इस देश में जो काम करता है वो आशा वर्कर्स का है।
इट्स एन एक्सीलेंट कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज। वो एक्चुअली घर घर जाके ठीक करते हैं। जो सिस्टम फेलियर हो रहा है वो आपके अस्पतालों के अंदर हो रहा है। तो वो सिस्टम ठीक करने की जगह आपने फिर से जो फोकस है पूरा वो आशा वर्कर्स के ऊपर डाल दिया है कि वो बताएंगी कैसे लेकर आएंगी। सो देयर सीम्स टू बी अ मिसमैच between meeting the gaps that really exist in the system. And having said that, I think what's also to be taken cognizance of at the fact is that a lot of these doctors are actually under a lot of stress. They work ridiculous number of hours, they don't have the right resources. So one has to go into the detail of what really went wrong before we just book the blame and we say one doctor at one place or one nurse at one place is the problem. Isn't that true? देखिए सोनल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, दो इसमें फैक्टर है। जितने मैं पिछले 25 सालों में देखा हूं, जितने टॉप के डॉक्टर्स थे, जैसे राजस्थान के सवाई मानसिंह अस्पताल के टॉप के डॉक्टर्स थे, वो सारे एचओडी छोड़कर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज जो खुले हैं, जयपुर में अकेले 6-7 मेडिकल कॉलेज खुल गए, वहां चले गए क्योंकि वहां वर्कलोड कम है, तनख्वाह ज्यादा है। तो इस सरकारी अस्पतालों में एक सिस्टम तो गड़बड़ा रहा है और वहां पर निजी अस्पताल इतने खुल रहे हैं कि ये जो डॉक्टर हैं सरकारी अस्पताल के, वो प्राइवेट प्रैक्टिस पे वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तनख्वाह के अलावा एक्स्ट्रा आमदनी हो रही है। ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम कैसे ठीक करे सरकार, इस पर भी ध्यान देना होगा। जहां तक आशा वर्कर्स की बात की, बिल्कुल सही है। ये कहीं न कहीं आप बहाना खोज रही हैं। कल आशा वर्कर्स भी बुलाई गई थी बीकानेर से, जो जल्दीबाजी में हम मंत्री से बात करने के चक्कर में उनसे बातचीत नहीं कर पाए। वो कह रही थी कि 4,500 रुपये हमें मिलते हैं, दुनिया भर के काम दे रखे हैं, वो भी 4,500 रुपये मिलते हैं हमें 6-6 महीने पर। तो हमारे पास तो ये जितने भी गांव की महिलाएं हैं, हम कोई मदद नहीं भी करते हैं तो कहती हैं कि बहन तुम मुझे अस्पताल ले चलो, तुम चलोगी। उनका एक भरोसा रहता है और हम ले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि शरद जी, आप एक बार बीकानेर अस्पताल की हालत जाकर देख लीजिएगा, वहां तो मरने के लिए ही जाती हैं। अब इस तरह की आशा वर्कर्स के जो ख्याल हैं, वो शायद मुझे लग रहा है कल बुलाई गई होंगी तो सरकार को बताई होंगी उन्होंने। और सरकार ने क्या किया, उनका लोड कम करने की जगह उन्हीं का लोड बढ़ा दिया है और अस्पताल जो ठीक करना चाहिए था उस पर कोई कर नहीं रहे हैं कार्रवाई। So there has to be something that's brewing. The government has to take responsibility and the health minister should really, take a check on things now because this is not right. 18 deaths in just a matter of 1 month is no joke. These are lives lost. These are lives the poorest in the country lost. People who don't have other resources. And remember, when a newborn mother dies, the entire family suffers. It's not just a death. It's the child, it's the family. She could have, other kids who are left behind. An entire family falls apart. And will the government really compensate for these families? That's something that we'll keep an eye on as well. But we are speaking to Sharat about these stories, who's been bringing us these excellent reports from across Rajasthan. We also have with us my colleague Shibi Mol. Shibi has been reporting from Kerala, where a shocking story of a toddler dying because of right after an anaesthesia was administered to the toddler has come to light. Shibi, this story particularly shocks me. Why? I'll tell you. Because Kerala is one of the places which is known for the best medical facilities in the country. Unlike what we see in the north, the medical burden on government infrastructure is less, the level of education is more. So when a lapse like this happens in Kerala, the entire confidence in the medical system is shaken up. Oh, well, exactly, Sonal. In fact, case has also been registered. The doctors are being questioned also. One of them, the anesthesiologists, have been named accused in the case. But, what the family is saying is that the child initially suffered a small injury when they took the child immediately to the medical center nearby. They said that there's a stitching required, and that's how they went to this hospital called Baby Memorial, where the family alleges that they did not even listen to the child's medical complications that the child had experienced in the past. He's a premature baby. He was born in 7 months. He was on ventilator support for close to 40 days. He survived, and later he was doing well in the last 1 year. So the family says they were trying to explain all of this, but the doctors immediately said that, they were not really bothered, but immediately said that plastic surgery needs to be conducted, and all their focus was on giving anesthesia as soon as possible. And the child was crying, so the family says that they were concerned about the child's health at that point, and they just went by whatever the doctor said. But the hospital maintains that
they did not do anything wrong. It was a cardiac arrest that the child suffered, which can happen in some cases. That's why this happened, is what the doctors have said. A medical board has been formed to inquire into it. The police today questioned the anesthesiologist, the pediatrician, and also the plastic surgeon. Based on the medical board's report is when the action will be, intensified in the next phase, is what the police sources are saying. Because, see, we will have to hear the doctor's side also if there is anything true. Because ultimately, no doctor would want to, harm their patient, or especially a child. So, in that case, what was the situation? Was it actually a cardiac arrest? That was unfortunate, is what the police is inquiring. But as of now, the family says it's not about getting a compensation, or it's not about shaming anybody, but it's about getting justice for the child if there was a lapse on the part of the doctor. And that we'll get to know only after the probe is completed. A 5-doctor team, medical team, has been constituted, including a public prosecutor as part of the medical board, who will be examining, who will be, recording the statements of these doctors. And later, based on that, the police is going to, take the investigation to the next phase. Yeah, but before I let you go, Shibi, and I don't know if Sharat is still with us, but look at the contrast in how different states respond to medical emergencies. We are talking about one toddler death. Look at people have turned up on the streets and they're demanding justice. A medical board has been set up, a full inquiry is going on how could this happen. On the other hand, in Rajasthan, 18 women die and the minister is still touring the hospitals. The minister is still touring to figure out what went wrong. First, the blame is on medicine, then the blame is on the doctors, and then when they fail on everything, they ask ASHA workers to go and carry out an extra drive. That's the difference in approaching health, and that has to be highlighted. Thanks, Shibi, for joining us with the very latest on that story and bringing out that contrast on what Rajasthan can indeed learn from Kerala there.